Jai Hind everyone, this is Vaishnavi Shukla and I have cleared my AFCAT 1 2022, 2023 thrice in a row with 200 score plus, and today I am going to discuss my strategy which I had followed during my preparation days and how you guys can ace AFCAT 1 2024. So starting with AFCAT 1 2024, the first notification that you get is basically in December. When you get the whole notification, you know about the seats, you know about the examination pattern that AFCAT follows. And the exam comes in February. This is basically your exam date when the exam will come. Now, talking about AFCAT 1 2024, there are basically 4 portions. If you have already given it, you must be knowing that there are 4 portions. One is maths, then comes reasoning, followed by English, and then is your GS. Now, talking about clearing the paper. These 3 subjects, maths, reasoning, and English, these are your base to clear the AFCAT paper. GS is your score booster. GS आपको तब हेल्प करेगी जब आपको कट ऑफ से ऊपर स्कोर जाना है मेरिट इन के लिए. जीएस के 25 क्वेश्चंस आते हैं, इंग्लिश के 30 क्वेश्चंस आते हैं, मैथ्स हैज 20 क्वेश्चंस and reasoning has again 25 questions. This is your pattern. Now, a student, if he has to clear the paper, just the cutoff, go with these 3 subjects. If you have to get merit in or score high, take GS. GS आप ये नहीं सोचोगे कि आप GS पहले दिन से ही साथ में इक्वली पढ़ना चालू करोगे. अगर आप साथ में पढ़ना चालू करोगे तो GS का पेपर बहुत बहुत वास्ट होता है. टॉकिंग अबाउट इन AFCAT, GS का पेपर बहुत वास्ट होता है. GS के पेपर को अगर आप लेके पढ़ना चालू करोगे, then it might be that you won't focus on maths, reasoning and English, leading to you won't be able to cut off your, आप अपना कट ऑफ भी क्लियर नहीं कर पाओगे. You won't be able to clear your cut-offs. So now talking about maths. For a student who is not good at maths and for a student who is also good at maths, I will say both the strategies. Since I had an upper hand that I was already having maths in my 11th, 12th high standards also, so मेरे लिए maths का paper थोड़ा easy हो जाता है. But talking about people who are not so much proficient in maths or who do not have such a good maths background, I would say go with the basic things, very basic things. Like maths के में 6 से 7 टॉपिक्स बहुत बेसिक होते हैं. फर्स्ट इज परसेंटेज, सेकंड इज SI and CI, third is ratio and proportion, fourth is profit and loss, fifth is work, time, speed and distance. This is basically 2 topics. I have combined it in one, that is work, speed, time and distance. ये mainly 5 major topics होते हैं जहां से max maths के questions आते हैं. Recently added in this is probability, which is very very basic. The class 10th का जो आपका होता है वो probability included होता है, इससे ऊपर नहीं जाता है. Talking about these stuffs, formulas based होते हैं. Practice as much as you can. As much as you can practice these stuffs, please go on practicing. Because these has formulas. आप formulas याद करना चाहोगे, आपसे formulas याद नहीं होंगे. It is very difficult. You will get confused in formulas, especially if you do not have a good maths background. So better practice. With practice, you will start learning those formulas. क्योंकि practice करते करते आपको उसकी आदत हो जाएगी. आप formulas खुद
खुद आपको समझ आने लगेगा कि फॉर्मूलाज कैसे डिड्यूस हुए हैं, फॉर्मूलाज कैसे बने थे, एंड आपको वो फॉर्मूलाज याद हो जाएंगी. सो दीज आर द मेजर टॉपिक्स विच यू मस्ट गो फॉर मैथ्स. परसेंटेज हुआ, SICI हुआ, रेशियो एंड प्रोपोर्शन हुआ, प्रॉफिट एंड लॉस हुआ, एंड वर्क टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस हुआ. मैक्स 15 क्वेश्चंस के अराउंड मैथ्स से यहीं से आ रहे होते हैं. रेस्ट कम्स फ्रॉम प्रोबेबिलिटी. 1-2 क्वेश्चंस यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम क्लॉक एंड कैलेंडर्स और ये सब चीजें. सो अगर आपको मैथ्स से डर लगता है, और इफ यू थिंक योरसेल्फ एज not so much proficient in maths, go with these things. maths का पेपर आपका आराम से निकल जाएगा. you will be able to clear your cutoffs for maths. as in specific cutoff नहीं होता है FCAT के पेपर में, but still you will be able to score good marks in maths, जिसके कारण आपका cutoff का पेपर निकल जाएगा. Next slide sir. okay, talking about reasoning. Now see, reasoning is such a topic जो बहुत vast होता है. Reasoning is such a thing that you can't say that हाँ these are the only specific questions that combines reasoning. Reasoning can be from any place. The thing is, I can say you the topics from where the questions basically come in reasoning. First is obviously blood relation. Blood relation and reasoning का अलग रिश्ता है, आप समझ जाओ. ब्लड रिलेशन से तो हर पेपर में क्वेश्चंस आते हैं. आप किसी भी पेपर में बैठ जाओ, SSC के पेपर में बैठ जाओ, बैंक के पेपर्स में बैठ जाओ, किसी भी पेपर में बैठ जाओ, आपको ब्लड रिलेशन से तो क्वेश्चन आने ही आने हैं. सेकंड कम्स इज ऑफ सिटिंग अरेंजमेंट्स. थर्ड इज सीक्वेंस एंड सीरीज. फोर्थ टॉपिक आपका आता है डायरेक्शंस. फिफ्थ आता है वेन डायग्राम. सिक्स्थ आता है ऑड वन आउट. सेवेंथ इज मिसिंग फिगर्स. These are the major topics जहां से रीजनिंग के क्वेश्चंस आते हैं. ब्लड रिलेशंस एवरीवन नोज. हमेशा इट विल बी लाइक मिक्सिंग अप द होल फैमिली ट्री. यू नीड टू फाइंड sitting arrangement. Either they will give you circular arrangement or directional arrangement or kind of straight arrangements are rare nowadays in the paper. Maximum it comes of circular and directional. Sequence and series, the common thing that they will give you some numbers like 4, 8 ऐसे numbers दे देंगे and then you have to fill. This is the sequence and series process that goes. Directions, basically you will be given different ways and distance calculation. This comes in basically directions वाले question आपको दे देगा कि राम went 20 kilometer north, then he moved 30 kilometer right towards west, east. These are the things which comes in directions. Venn diagram, there will be 3 or 4 stuffs given together, like you have to associate basically between what is a common association between that in which you can find out. So see, basically if you talk about this concept of Venn diagram, students who are not from maths background as in 11 and 12 or non-maths background, I would say you, Venn diagram basically होता क्या है? सेट्स बोल के एक कंसेप्ट होती है मैथ्स में, ठीक है? जो सेट्स की कंसेप्ट होती है ना वही यूज होती है. द थिंग इज मैथ्स में सेट्स आर बेसिकली इन नंबर्स. वेन डायग्राम में जो एफकेट वेन डायग्राम देता है, इस केस में आपको जो मिलता है दैट इज बेसिकली यू हैव टू एस्टैब्लिश अ रिलेशनशिप बिटवीन थिंग्स. माइट बी एनिमल्स दे दे आपको, माइट बी सम नॉन लिविंग थिंग्स, सम नॉन लिविंग लिविंग स्टफ्स, सब मिला देंगे. सपोज दे गिव यू डॉक्टर, मेल, फीमेल. Now see, a doctor can be a male, a doctor can be a female. Okay? So when you talk about the Venn diagram for a expression like this, doctor, male, female, so it comes, this is the whole doctor population. This is the whole population for doctor, among which some eraser. Among which it will come that a part of the male population, yellow था ना, white था. This is the whole doctor population that we have taken. Now a part of this population is male, a part of this population is female. Now you cannot say
This is suppose the female population, this is suppose the male population. Now you cannot say that the whole male population will be a doctor, because in male there might be an engineer, might be teachers, might be say Air Force pilots also, since we are going for AFCAT entries. Similarly, in this case of female also, we can say that there might be some female doctors, but again there might be some female engineers, female pilots, female teachers. So this is the concept of Venn diagram. Rest, you will obviously find various YouTube videos on our channel regarding Venn diagram and how Venn diagram can be solved. The following teachers will teach you. Next comes odd one out. Odd one out is basically you need to find 2 to 3, 4 steps will be given. You need to find which one is not common. Like if they had given you rabbit, hen, crow, and peacock, you obviously know that all 3 are birds. The rabbit is not a bird. So this is the concept of odd one out. Next comes missing figures. Missing figures plus symmetry, I would say. Symmetry plus missing figures. Missing figures में क्या होगा कि आपको either shadow निकालने होते हैं, या नहीं तो आपको complete करना पड़ता है figure, या नहीं तो आपको mirror image निकालना होता है. कि mirror image क्या हो सकता है? So I will explain this concept of missing figures. So what they do, usually they give a figure जिसके this portion will be filled. You have to find out this portion, and there will be options A, B, C, and D. Now one of the figures will complete this whole figure. Either you need to find this out. This is one type of missing figures. Secondly, they can give the figure and you have to find the mirror image of the figure. This is the mirror image concept. This was completing the figure. This is the mirror image. Sometimes they also do that they go for symmetry. As in, आपको ये पता करना पड़ेगा कि अगर लेफ्ट मिरर में ऐसे दिखता है, सपोज अ फिगर इज बीइंग शोन इन दिस वे, तो उसका जो सिमेट्री होगा वो कैसा दिखेगा. नाउ दिस इज अ वेरी सिंपल फिगर, बट ऐसे फिगर्स नहीं देते, ऑब्वियसली द लेवल इज हाई, तो अलग देंगे. सो दीज आर बेसिकली द मेजर 3 एरिया जहाँ पे मिसिंग फिगर्स को कंप्लीट कर रहे होते हैं. सो दीज वर द मेजर टॉपिक्स इफ यू टॉक अबाउट रीजनिंग के सेक्शन में. रेस्ट अगेन आई वुड से रीजनिंग बहुत चीज वास्ट होती है, उसमें कभी कभार बहुत अलग क्वेश्चंस पे आ सकते हैं. 1-2 क्वेश्चंस यू माइट आल्सो गेट एज इन वेयर यू हैव टू फाइंड द डेज कि कौन सा दिन होता. if 1st of November was Monday, what will be 1st of November 2000? If 1st of November 2021 was Monday, what will be 1st of November 2026? So वो चीजें भी होती है, 1-2 क्वेश्चन. Rest if you talk about how to do for reasoning, I would suggest go with the YouTube videos that is available on this platform. Rest solve mocks. Reasoning को अच्छा करना है तो solve mocks plus PYQs. मॉक्स एंड पीवाईक्यूज दोनों आपके वेबसाइट पे अवेलेबल है, जो मानिकशा एकेडमी का वेबसाइट है उस पे आपको अवेलेबल है. आप जाके इसको सॉल्व करो. द मोर यू प्रैक्टिस रीजनिंग, द मोर फास्ट you will be in decoding things in the exam. The more you are slow with reasoning, the more it will be time taking for you in the exam. और तुम्हारा फिर पेपर 2 घंटे में भी नहीं कंप्लीट हो पाएगा, and then you will term that reasoning was hard. रीजनिंग इजी तब होगा जब आप मॉक्स और पीवाईक्यू सॉल्व करोगे अच्छे से, क्योंकि रीजनिंग का कोई सिलेबस नहीं एग्जिस्ट करता है. आप कभी भी किसी भी इंसान से जाके पूछ जाओ कि व्हाट शुड आई स्टडी फॉर रीजनिंग, नो वन हैज एन आंसर टू व्हाट शुड आई स्टडी फॉर रीजनिंग. रीजनिंग इज अ वेरी वास्ट टॉपिक. कमिंग टू इंग्लिश, नाउ सी, इंग्लिश का पेपर बहुत स्टैटिक होता है, एज इन देयर इज ऑलवेज अ फिक्स्ड पोर्शंस, फिक्स्ड सिलेबस फॉर इंग्लिश. आई वुड रादर से सिनोनिम्स प्लस एंटोनिम्स आप एक्सपेक्ट करते हो, एरर्स आप एक्सपेक्ट करते हो, कंप्लीट द सेंटेंस
fill in the blanks. Then idioms and phrases, jumbled paragraphs or jumble sentences, I would say. Comprehension, very, very, very important. This is the basic paper. That synonyms, antonyms आएंगे, those basically 5 to 6 synonyms, antonyms, 6 around again 5 to 6 questions of errors. Complete the sentences के 3 to 4 questions आ रहे होते हैं. Fill in the blanks के again 5 to 6. Either this will come in as a paragraph form, or you can expect normal questions in this. Then there are idioms and phrases. Again 4 to 5 questions you can expect from this. Jumbled paragraphs आते हैं जिसमें आपको basically you have to rearrange the statements. And there was one more basically that is called para jumbles. Jumbled paragraph plus sentences भी आते हैं कभी-कभी that you need to, तो आप इसके भी 3 to 4 questions expect कर सकते हो. Then the questions in para jumbles increases, that they go to 4 to 5 questions in para jumbles, and then there is always at least 2 to 3 comprehension जिस पे questions आ रहे होते हैं. Now see, comprehension, if you have a reading ability, comprehension will be very easy for you to solve. Comprehension will be very easy. अगर आपकी न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत है, बुक्स पढ़ने की आदत है, तो आपके लिए comprehension easy हो जाता है solve करना. Because comprehension में बहुत time ये होता है. See, in every other case ना, you just need 10 seconds to read the question. But in comprehension, you need a bit of patience to read the paragraph, to understand the paragraph, and then to decode the paragraph. So, inculcate reading ability. I would say inculcate reading ability for comprehension. That will benefit you not only in your comprehension, but even after your AFSBs. When you will go for lecturates, when you will have to give appear for TAT, VAT, PPDTs and all stories and all में तब बहुत help करता है reading ability. क्योंकि आपको when you clear your these paper, written paper, उसके बाद when you go for your AFSB, you have to be updated with the current news. उस time पे आपको newspaper पढ़ना पड़ेगा. If you do not have the patience to read a newspaper, if you do not have the habit of reading newspapers, books, you will not be able to stand in front of the whole bunch of people and deliver your lecturate, deliver your stories written, or even sit in front of the PI during the PI round. So, inculcate reading ability, I would say. Now see, synonyms and antonyms, again I would say, past 10 years paper. Past 10 years paper, synonyms, antonyms, हर बार repeat हो रहे होते हैं. Every time it is either one or the other that gets repeated. So, solve past 10 years paper to get synonyms and antonyms. Cracking synonyms and antonyms in AFCAT paper is easy rather than in the CDS paper. They aren't so much tough, so you can go with past 10 years paper for synonyms and antonyms. Errors, revise. Revise the rules. As much as you revise the rules, plus practice. Practice error questions. Just like you practice maths, practice the error questions. Because there are innumerable rules of errors. If you start memorizing one and one by one, you won't be able to practice, you won't be able to even decode the right error in the paper. So rather revise the rules and keep practicing along in order to decode errors. मैक्स टाइम स्टूडेंट्स को यही नहीं पता चल रहा होता है कि सेंटेंस में एरर एग्जिस्ट करता भी है कि नहीं, बिकॉज देयर इज अ वास्ट डिफरेंस इन स्पीकिंग इंग्लिश एंड राइटिंग इंग्लिश करेक्टली. अंडरस्टैंड द डिफरेंस. एरर्स आप रिवाइज करोगे तो आपको सही पता चलेगा कि एरर है कहां, बिकॉज राइटिंग इंग्लिश इंक्लूड्स ग्रामर. Grammar doesn't include in your speaking English. When we speak English, you do not focus much on grammar, but when you write the same English, you focus on grammar. So basically the error is in the grammar. So you need to
continuously revise the rules and practice. Complete the sentences, I would say, is the easiest part in the whole English portion if you talk. Because आपको हमेशा यही होता है कि 4 sentences तो दिए रहते हैं, एक आपको ढूंढना होता है the right one. चार sentences दिए होते हैं, एक आपको खोजना होता है. Now, the level which AFCAT is following currently, I would say, is 4 sentences are obviously there, one will be the right one, which are very easy. अच्छा बेसिक सवाल होता है, आप आराम से उसको डिकोड कर सकते हो. जस्ट यू नीड अ बिट ऑफ प्रैक्टिस, उसके अलावा आप कर लोगे. कंप्लीट द सेंटेंसेस, फिल इन द ब्लैंक्स सेम है, बट द थिंग इज नो प्रॉपर यूज ऑफ मॉडल्स, prepositions as well as conjunctions and determiners. Mainly fill in the blanks इसी में होते हैं कि either they will, you have to fill modals or prepositions or conjunctions or determiners. Max times हमें लगता है कि हमने जो preposition fill किया है वो सही है, but grammatically it is wrong. Grammatically वो गलत हो जाते हैं. And then according to you, that time the miscalculation starts. According to you, what happens? You had solved the right way, but grammatically it was correct, wrong, and then you think that मैंने तो सही solve किया था, मेरे तो marks आने चाहिए थे, क्यों नहीं आए? So read prepositions, conjunctions, modals and determiners very thoroughly. This will help you not only in fill in the blanks, but it will also help you in errors. क्योंकि यहाँ पे भी अच्छे preposition के errors आ रहे होते हैं. तो it will help you in both errors as well as fill in the blanks. Now comes idioms and phrases, मुहावरे. See, मुहावरे का ऐसा सीन है कि this is the most unpredicted part of the AFCAT paper, I would say. The most unpredicted part. Because idioms and phrases, they kind of do not repeat. Because there are too much idioms and phrases existing in this world, so आप कहीं से भी उठा के दे सकते हो. So, practice as much as is available for you. जितने भी मॉक्स में रह रहे हैं, PYQs में आपको मिलते हैं, प्रैक्टिस करो. बट देखो, आपको जाके कट ऑफ क्लियर करके पेपर निकालना है. यू डू नॉट हैव टू स्कोर होल 300 मार्क्स. आज तक ना कोई सॉल्व करके निकाल पाया है, ना कोई निकाल सकेगा. तो इडियम्स एंड फ्रेजेस आप उतना ही करो जितना आपको याद आ रहा है इन द एग्जाम पेपर, जितना आप समझ सक रहे हो, जितना आपसे हो पा रहा है. डू नॉट ओवर अटेम्प्ट और डू नॉट अटेम्प्ट जस्ट कि चलो तुक्का मार देते हैं, एक तो राइट हो ही जाएगा. यू विल एंड अप लूजिंग मार्क्स. यू विल एंड अप लूजिंग मार्क्स लीडिंग टू नॉट क्लियरेंस ऑफ कट ऑफ्स. आपकी वहां पे एक ड्रॉबैक हो जाएगी. नेक्स्ट कम्स इज जम्बल्ड पैराग्राफ्स. जो जम्बल्ड पैराग्राफ्स होती है, दिस आर बेसिकली, और पैराजम्बल्स, यू कैन से बोथ. जम्बल्ड पैराग्राफ्स एंड पैराजम्बल्स. सो बेसिकली व्हाट विल बी देयर? Concept of parajumbles. See, now when you do parajumbles, one is there will be 4 sentences. You have to arrange कि PQRS होगा या PRQS होगा, something like this. This is the first, that 4 sentences, arrange it. Second comes, you will be given a starting sentence and an ending sentence. बीच में there will be 1, 2, 3, 4 sentences होंगे. Now you have to arrange this, keeping in mind that you already have a starting sentence and an ending sentence. Third is, either you will be given this case, that starting sentence or you will be given the ending sentence. So ये 3 cases होते हैं पैराजम्बल्स में. रेस्ट पैराजम्बल्स इज ऑल अबाउट परमुटेशन, कॉम्बिनेशन. आई वुड से ध्यान से करना, क्योंकि अगेन parajumble also follows this category, that you think option was PQSR, but actually option होता है PQRS. बहुत common है.
people generally lose marks in para jumbles? Generally, because there are various combinations. बहुतों को बहुत combinations possible है and सबके हिसाब से उनका combination उनको सही लग रहा होता है, but actually combination कुछ different हो रहा होता है. So go with clarity on this. समझ नहीं आ रहा है, don't attempt, I would say. Don't attempt in confusion. If you attempt para jumbles in confusion, you will land up scoring low. This is a very major drawback of para jumbles. Next comes comprehension. Comprehension ka, as I said, inculcate reading habits. As much as your reading improves, you will be able to understand the comprehension, you will be able to solve the comprehension, you will be able to decode the comprehension, because currently AFCAT follows the pattern of what can be inferred, which is basically inference based questions, I would say, or it goes with critical reasoning questions. Either it will go with inference based questions, that what did you infer from this passage, or what did the author mean, or it will go that out of the 4 options given, which one is only right. It goes with this. The basic questions which used to come in the before papers of AFCAT are usually not followed. This is the current pattern which AFCAT follows right now, that is inference based questions and critical reasoning questions. So focus this. This will improve only when you solve as much as comprehensions. Do not run away from comprehensions, because once you understand the passage, comprehension is the score booster. It will give you enormous marks to clear the paper. So go with comprehensions, read comprehensions. It will benefit you in your written as well as in your AFSB. Last comes the GS section. Now there is a very common notion, very common confusion that, ma'am, sir, should I read GS or not? If I am reading GS, how much should I read GS? What should I read in GS? Or is that I should prepare everything as I prepare for CDS? Now see, GS never clears your AFCAT paper. Remember this. GS करके आप अपना AFCAT का पेपर नहीं निकाल सकते हो. GS is a vast topic. It has science, history, polity, current, geography, static, and the list goes on. There are many more things. GS का कोई syllabus नहीं exist करता है when you talk about AFCAT paper. They can ask you a question of a news happened in 2007 stating that I asked you this question because this aircraft was in news. They can ask about MiG-29, MiG-21, just because right now they are in news for decommissioning. तो वो कुछ भी पूछ सकता है. Now, what should be your strategy for GS when you talk about GS? So देखो, GS में 3 से 4 चीजें होती है जो आपको पढ़ना ही होता है. History. You get around 5 to 6 questions in history. Current. 6 to 7 questions आपके आ जाते हैं. Static, which includes defense basically. Defense के you can expect 5 to 6 questions. Then there are C topics like sports, books and authors, awards, firsts. ये एक जाता है जिसमें से at least 3 to 4 questions आ जाते हैं. Then there comes
साइंस, मिक्स ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी. साइंस के भी 2 से 3 क्वेश्चन आ जाते हैं. देन आपका एक क्वेश्चन आएगा पॉलिटी का, 1 से 2 क्वेश्चन आएंगे ज्योग्राफी के. Now see, for one question, 1 and 2 questions, you start going on reading the whole Lakshmikant, the whole NCERT, and if you're just preparing for AFCAT, then that's a very, very bad idea. That's a very, very, I would say, bad strategy that you are following for GS. Go with history. History के questions हर पेपर में AFCAT के 5 to 6 questions आते ही आते हैं. Go with history. Study history, but do not study history like you study for CAPF or CDS. Study history in a strategic manner. आपके YouTube साइट पे, इस YouTube चैनल पे अवेलेबल होंगे हिस्ट्री के वीडियोस रिगार्डिंग एफकैट. स्टडी दोज, मेक नोट्स ऑफ दोज, रिवाइज दोज एंड देन गो फॉर द हिस्ट्री पेपर. करंट, सिंस यू विल बी अपियरिंग, सी इफ यू आर अपियरिंग फॉर CDS CAPF तो आपके पास 1 ईयर का करंट ऑलरेडी रहता है इन हैंड. सो करंट का आप जा सकते हो. रेस्ट आई वुड से फॉर एफकैट 7 to 8 months का I would consider, not 6 months. Before it was 6 months, but right now I would say 7 to 8 months. It's better you go for with 1 year. Current का news सारा आप ले लो, पूछ लेते हैं आजकल current, because current का since the level has to be a bit above, so they consider current के 1 year के questions. So read current. And secondly, current they max times mix with defense. Now defense, I will talk about this topic basically in GS. Defense. You are preparing for a defense paper. You cannot expect that you won't get questions of defense in defense paper. Now defense के questions कैसे आते हैं? First, exercises. Either you will get questions of exercises. Second, you can get questions of various aircrafts. Third, you can get questions of missiles. Fourth, you get questions of schools, academies, colleges, commands related to defense. They can ask you counter-insurgency warfare school कहाँ है? This is a past year mock PYQ question in AFCAT. They had asked. अगर आपको नहीं पता हो, Waringte in Mizoram, you cannot solve this question. They can ask you various command. Western command बताओ Air Force का, Eastern command बताओ Air Force का, और Army के commands पूछ लेते हैं. That comes in commands. You are going for an officer rank paper. You need to remember the ranks as well as equivalent ranks. They can ask you a major in Indian Army is equivalent to which rank in Indian Navy? The answer will be Lieutenant Commander. If you do not know, you cannot solve. So ranks and its equivalents are a very common question which is every year kind of repeated, or you would say every year it comes in the paper. So please remember the ranks. And secondly, यार आप ऑफिसर के लिए प्रिपेयर हो रहे हो, आप ऑफिसर बनने वाले हो इन फ्यूचर. अगर आपको खुद नहीं पता होगा कि अगर आप फ्लाइंग ऑफिसर के बाद क्या बनने वाले हो, how can you expect yourself to be an officer? So remember the ranks as well as the equivalents in the different forces. Next comes is आपसे पूछ लेंगे, just like they ask about aircrafts, they can also ask about different other arms, ammunition, plus vehicles possessed by various different forces of Indian soil. Like Indian Army का वो पूछ देंगे. Like इस साल का क्वेश्चन आया था, T-90 किसको बोला जाता है? If you do not know, भीष्म होता है. जो भीष्म टैंक होता है उसका दूसरा नाम है T-90. इसी ईयर का पेपर का क्वेश्चन था that सूर्य किरण uses which aircraft? Hawk, Mk2 is the answer. So these are the basic questions like which while you are preparing for a paper in defense you need to know. आप AFCAT का पेपर भरने जा रहे हो. If you do not know which aircraft is a fighter aircraft, which aircraft is a transport aircraft, which aircraft is a fuel refilling aircraft, or which aircraft is used for which purpose,
You cannot expect yourself to be sitting in this exam if you do not know the basics. आपको ये नहीं पता कि MiG-21 फाइटर एयरक्राफ्ट है या ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, तो आप कैसे आप आ सकते हो उसका पेपर देने. These are the basic information which you must know because you are sitting for a defense paper. Exercises very important. हर साल इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स conducts numerous exercises. Many a times they are in news just because either उसमें, and recent exercises are such exercises that have shown our technology in different countries. Veer Guardian हुआ था. It was the first time. It was also the first time that a women fighter pilot had taken part in Veer Guardian. So exercises में you can expect match the following, or they will directly ask you कि लैमिटाइन एक्सरसाइज किसका होता है. प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है लैमिटाइन एक्सरसाइज किसका होता है, स्टिचल्स के साथ होता है. So these are the questions जो exercises, तो exercises से आप हर साल expect करते हो कि questions इससे तो बनने ही बनने हैं, और किसी सेक्शन से आए ना एक्सरसाइजेस से तो जरूर क्वेश्चन आएंगे. एयरक्राफ्ट से क्वेश्चन आता है, स्कूल एकेडमी कॉलेज से क्वेश्चन आएगा. I remember when I had given my FCAT 1 2023, there was this match the following, जिसमें 4 colleges का नाम था and I had to match with 4 different options. So cover this as much as you can. Next comes ranks and equivalents. बता दिया था मैंने. Different other arms and ammunitions. Now this is there. आपसे डिफरेंट गन्स के बारे में पूछ दिया जाएगा, आपसे डिफरेंट टैंक्स के बारे में पूछ दिया जाएगा, आपसे डिफरेंट मिसाइल्स के बारे में पूछ दिया जाएगा. ब्रह्मोस इज करेंटली इन न्यूज. यू कैन एक्सपेक्ट वेरियस क्वेश्चंस फ्रॉम ब्रह्मोस. अग्नि इज इन न्यूज. आपसे ये पूछ देंगे अग्नि कैसे टाइप के मिसाइल है, ब्रह्मोस कैसे टाइप के मिसाइल है, रेंज पूछ दिया जाएगा. सो मिसाइल्स एंड सी मिसाइल्स आर अ कंफ्यूजिंग टॉपिक, आई वुड इवन genuinely say. So read and revise missiles as much as you can, वरना you will get confused because the names are kind of similar and you get confused कि which is a surface to surface missile, which is surface to air missile, which is air to air missile. So better revise missiles as much as you can. Rest different arms and ammunitions वो वैसे ही पूछ देंगे कि हाँ कौन. And max times they mix defense plus current. Exercises में भी max time you will get current वाले exercises जो currently conduct किए होंगे. So kind of current and defense gets mixed. Next topic is, if we talk about sports books awards, इनसे 1 से 2 क्वेश्चन हर टॉपिक से आते हैं. वो स्पोर्ट्स से पूछ देंगे, वो बुक्स एंड ऑथर से पूछ देंगे, वो अवार्ड से पूछ देंगे, वो फर्स्ट कम फर्स्ट से पूछ देंगे. नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि स्पोर्ट्स एंड अवार्ड्स में क्या पूछा जा सकता है. स्पोर्ट्स, 4 major things, 4 major events I would say स्पोर्ट्स में हमेशा कवर हो रही होती है. रीसेंट कॉमनवेल्थ गेम्स, रीसेंट ओलंपिक्स, रीसेंट नेशनल गेम्स, रीसेंट खेलो इंडिया के जितने भी हो रहे होते हैं जो भी, एंड देन देयर आर फीफा वर्ल्ड कप्स, ये जितने भी होते हैं, ये सब चीज हमेशा स्पोर्ट्स में आ रहे होते हैं. करेंटली आई वुड से वर्ल्ड कप होने वाली है क्रिकेट की, फीफा हुई थी, ओलंपिक्स होने वाली है 2024 पेरिस ओलंपिक्स, देन कॉमनवेल्थ होने वाला है, एशियन गेम्स चल रहा है. तो FCAT 1 2024 में this scope gets broadened. ये स्कोप ब्रॉड हो जाता है क्योंकि at a point of time you are already having World Cup, you are having Asian Games, you are having Commonwealth, you are having Olympics, you are having FIFA. तो ये स्कोप बहुत broaden हो जाता है. So the chances to give from this area increases. So you can expect good amount of sports questions in this FCAT 1 2024 paper. Secondly, तो यहाँ से तो आपके क्वेश्चंस बन ही रहे होते हैं. नाउ इसमें आपसे क्या पूछा जाएगा? इसमें आपसे फर्स्ट पूछ सकते हैं कि फर्स्ट गोल्ड मेडल किसने जीता था इन ओलंपिक्स फ्रॉम इंडिया, फर्स्ट सिल्वर किसने जीता था इन फ्रॉम ओलंपिक्स इन इंडिया, वेरियस डिफरेंट क्वेश्चंस. हॉकी से क्वेश्चंस आते हैं बहुत बारी बिकॉज हॉकी करेंटली अब वापस रिवाइव हो रहा है. करंट लास्ट टाइम हमने देखा था ओलंपिक्स में हमने ब्रॉन्ज लाया था, तो वो चीजें जो रिवाइव हो रही है उसके कारण ये एरिया ब्रॉडन हुए जा रहे हैं. नाउ यू कैन एक्सपेक्ट old questions also like when did it start or when was it started, ये सब के questions first आप expect कर सकते हो. recent like mottos expect कर सकते हो, then you can expect mascots in this thing, ये आपसे expected है. या नहीं तो they can give you questions regarding which player is associated to which sport, player and sport.
Because see, in recent times, what has happened, there are numerous new players who have come into action, who have won medals for India, and जिनको लोग उतने अच्छे से नहीं जान रहे होते हैं. शूटिंग में आए हैं, बैडमिंटन में आए हैं, टेनिस में आए हैं. इक्वेस्ट्रियन इज अ न्यू स्पोर्ट. अभी आपने अगर रीसेंट न्यूज में देखा होगा तो इंडिया वोन अ मेडल, गोल्ड मेडल इन इक्वेस्ट्रियन आफ्टर 41 years. सो प्लेयर्स एंड स्पोर्ट्स का एसोसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. आपको उसमें से कोई प्लेयर उठा के दे दे जो रीसेंट इक्वेस्ट्रियन टीम ने जीता है, जो रीसेंट रोइंग टीम ने अभी हमारे सिल्वर मेडल लेके आए हैं एशियन गेम्स में, आपको उसमें से कोई उठा के दे दे. अगर आप करंट न्यूज के साथ आप नहीं एसोसिएटेड हो, आप नहीं चल रहे हो विद द करंट हो, तो आप यहाँ पे यू कैन लूज मार्क्स. सो बेटर यूज योर माइंड. अगर आपको नहीं आता है, ड्रॉप द क्वेश्चन, डू नॉट ओवर अटेम्प्ट, और आई वुड से डू नॉट अटेम्प्ट एज इन डाउट. प्लीज, यू विल लूज मार्क्स. सेकेंडली, आपका इसमें आ जाता है टर्म्स इन स्पोर्ट्स. ये पूछ देते यार, दिस इज अ वेरी कॉमन टॉपिक दे आस्क, बिकॉज sports like billiards, equestrian, sports like snooker, sports like golf, then polo, ये सब sports में there are various terms which even the normal person doesn't know. You can expect terms of cricket, you can expect terms of football, you can expect terms of badminton, which are the common sports which people know about, like every other person would know about. So you can expect that the normal public knows about you. But sports like golf, sports like polo, sports like swimming, where there is no such media coverage, there is no such human involvement as such, you can expect questions from those sports. So cover your terms in sports very well, because यहाँ से question बनेंगे. They can give you match the following, or they can give you odd one out. Remember, reasoning का odd one out sports के terms से भी बन सकता है. There is no hard and fast rule. वो यहाँ से चार, सपोज उन्होंने बैडमिंटन उठाया, बैडमिंटन के 4 टर्म्स दे दिए, 5वां टर्म गोल्फ का टर्म है. आपको पता चलना चाहिए कि गोल्फ का कौन सा टर्म है. बर्डी गोल्फ का टर्म होता है. इफ यू डू नॉट नो दैट बर्डी इज अ टर्म ऑफ गोल्फ, you cannot find out that odd one out. So terms in sports is again important. Next comes winners. Who won what? अर्जुना अवार्ड किसको मिला? मेजर ध्यानचंद अवार्ड किसको मिला? रिमेंबर, नेम हैज बीन चेंज फ्रॉम राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड टू मेजर ध्यानचंद अवार्ड. विनर्स पूछ सकते हैं आपसे. इंटरनेशनली, नेशनली, बोथ. एंड दिस इज बेसिकली इन दोज फील्ड जहां पे लोग न्यूज कवरेज नहीं रखते और देयर इज वेरी लिटिल मीडिया कवरेज. सो यू कैन एक्सपेक्ट विनर्स फ्रॉम दोज सेक्शंस आल्सो. इन स्पोर्ट्स, again there is this section in sports where there are various mixed sections in sports also, I can say, because cricket ka they have asked that who was the first person to score 200 runs, first Indian to score 200 runs, first Indian to take 10 wickets in test matches. So keep up with the recent sports news also. Current jitna you can keep up with, go with it, because current एक ऐसा topic है that will help you in defense, that will help you in sports, that will help you in awards. ये तीनों चीजों में वो आपको हेल्प कर देता है. तो अगर आप उसके साथ रहते हो ना, तो इट कैन ऑल्सो गो विद कि ज्योग्राफी इज ऑल्सो समटाइम्स कंबाइंड विद करंट. सो करंट अफेयर्स जितना आप कंटेक्ट में रख सकते हो रखो. नोट डाउन द करंट अफेयर्स. सी, करंट अफेयर्स बहुत होते हैं. यू कैन नॉट एक्सपेक्ट, यू आर नॉट अ रोबोट, यू आर अ ह्यूमन बीइंग. यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि ओके यू रेड द न्यूज़पेपर टुडे, यू विल बी एबल टू कीप इट इन योर माइंड. नो, YouTube पे it is available on this channel. आप जाके जो current affairs है, at least write down those current affairs. Write down. When you write down, you will get a writing ability. Secondly, when you write things stay in your mind. When you do not write and you expect कि अरे ये तो हो जाएगा, this I will remember, अरे this one I know. Max times it happens in the examination कि वही answer आपको नहीं याद आ रहा होता है. You end up taking the wrong portion. You end up marking the wrong answer, and then you realize अरे यार ये तो पढ़ा ही था but मेरे से तो नहीं हुआ. So write the current affairs. While you write, underline or highlight the important terms that is present in the current affairs section. This will help you in both ways. It will help you remember the current affairs, and secondly when you will have to revise, you will know how crisp you can go, how crisp
तो उस टाइम पे you do not need to cover everything, you can just go with the basic things, the basic highlights. Okay, so current का ये चीज होता है, sports का ये हो गया. Next comes is books and authors. So books and authors का एक question आता है, पढ़ के जाओ तो भी कोई बात नहीं है. देखो, this thing ना whole depends upon your luck, I would say. Sometimes in some shifts, such a book comes that you cannot even expect that AFCAT would give such a book. Or sometimes it would give such a book that you had, max of the people sitting in that exam would have never heard its name. I remember when I was sitting in one of my AFCAT papers, the question had come ki Ignited Minds was written by whom? Everyone knows Ignited Minds is being written by Dr. APJ Abdul Kalam. But then there are also some questions, some books which you do not expect कि वो आ जाएगा. So this is totally based on luck, I would say. Attempt it only if you want. कोई hard and fast rule नहीं है. Attempt this, attempt this, attempt the current section, attempt history. That will take your, that can score marks in GS. Books and authors, not any abbreviation comes. That is also not very hard and fast that you need to cover all abbreviations. Even days. Days also sometimes comes. कि this day stands for, और suppose February 2nd को World Wetland Day is celebrated, February 1 को you celebrate Indian Coast Guard Day. So वैसे पूछ लेते हैं. Remembering this, I would also say one thing which I had skipped in defense is, I am writing here only, mottos. For the last 3-4 years of paper, they have started asking mottos. Indian Coast Guard का motto पूछा गया है. In then various CAPF, like CRPF, SSB, BSF, even DRDO motto has been asked. NCC का motto पूछा गया है. So remember the mottos. This year के इस साल के paper में there was this question which I would say that was a very easy question. In if anyone would consider, that was the motto of Indian Air Force, but it was asked in my paper, but you cannot expect that others would also give that what was the motto of Indian Air Force. That I would say they had given, might be luckily or whichever way you say, but in other shifts they did not get such an easy question, they were asked these questions. So please go with the mottos. In defense, mottos bhi aane lage hain, and keep up with the DRDO news. Because DRDO and HAL and various Indian Army, Indian Air Force and Indian Navy, they are basically too much in highlights due to these newses, because as I said, various technological developments are taking place. India is trying to make many of its defense-based things as in made in India. So DRDO is currently too much in news. So please go with the DRDO news. It's too much important. ISRO, DRDO, HAL, NASA, these are the topics जो थोड़े ज़्यादा news में रह रहे होते हैं. So cover these things also. As I said, days, 1-2 days पूछ देते हैं वो आपसे. Secondly, awards में you can expect that current awards, like if we talk about awards, they can ask you regarding Padma Bhushan, Vibhushan, or international awards like Oscar, then various music awards, or you can expect this Nobel Prize, then Booker Prize, Pulitzer Prize. These are the common topics from where you can expect the questions. Basically, जो भी current awards दिए गए हुए हैं, either if it is for given to an Indian personality, or basically see, if it has been conferred to an Indian personality, it becomes important whether he is an NRI or an Indian, or he is from an Indian soil or Indian origin, you would say. ये थोड़े important हो जाते हैं. So I would say कि international awards में complete these important awards. I won't say go with every award, but these are some of the major awards.
that you should go with. Now, I would talk about history. Since I already said this portion is coming of 5 to 6 questions. Let's talk about history. Now see, 3 sections होते हैं, ancient, medieval and modern. जिसमें से modern से तो very low chances are there that you can get questions. एक से दो आगे तो आगे, वरना you can expect one. The questions in history comes from medieval. They are asking about art, culture, architecture, temples, kings. So they are asking about this. जिसके कारण medieval history becomes important in AFCAT paper. Even in my paper this time, there were good amount of questions from medieval history. There was just one question from modern history. There was one question from ancient history. Rest 4 questions were there from medieval history. So medieval history के जो भी notes आपको provide किए जाएंगे, medieval history के जो भी lectures आपको दिए जाएंगे on YouTube, please go through with those medieval lectures के history के notes as well as the lectures, and make a note of the lecture, make a note of these things so that it can help you while you are revising. Every day it is not possible that you open the YouTube, you watch 2 to 3 hours of lecture every day. It is not possible. You are wasting your time also as well as your energy also. So write the notes, but please cover medieval history because it is important for your paper. Every time right now, even if you talk about CDS paper, do not skip history, please. Do not skip history. एक टाइम होता था when people used to say that history बिना पढ़े जाओगे तो भी पेपर निकल जाएगा. नहीं निकलने वाला अब history का पेपर. You have to study ancient, you have to study medieval, you have to study. खाली मॉडर्न पढ़ के जाओगे हिस्ट्री को तो सीडीएस का पेपर भी नहीं निकलने वाला है बिकॉज यूपीएससी इज इंक्रीजिंग इट्स लेवल. अच्छा खासा मेडिवल इस बार भी पेपर में पूछा गया था, एंशिएंट भी पूछा गया था, मॉडर्न कंप्राइज्ड ऑफ अ वेरी लो लेवल बिकॉज यूपीएससी नोज की मॉडर्न सब पढ़ के आएंगे, जो नहीं पढ़ेगा वो है एंशिएंट एंड मेडिवल. सो प्लीज स्टडी एंशिएंट एंड मेडिवल इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सीडीएस ऑल्सो. रेस्ट एफकेट में क्रिस्प आपको मिलेंगे यूट्यूब पे, तो गो विद दोज, बट डू नॉट स्किप हिस्ट्री. रेस्ट आर्टिकल रिलेटेड एक क्वेश्चन आ जाता है पॉलिटी से. ज्योग्राफी मैक्स टाइम्स इट इज ज्योग्राफी प्लस करंट आता है. नेक्स्ट समटाइम्स क्वेश्चंस ऑन डांसेस आल्सो कम्स, क्वेश्चंस ऑन फेस्टिवल्स कम्स. सो दीज आर सी मिसलेनियस क्वेश्चंस. I would say these are miscellaneous questions. If you know, attempt it. If you don't know, leave it. There is no hard and fast rule that you need to score 300 plus. You need to clear the cutoff so that you are applicable for AFSB. आपको इसके लिए applicable होना है. पहले आप रिटन क्लियर करके इसके लिए तो अप्लाई करो, फिर हम मेरिटन की बात करते हैं. आपको इसके लिए एप्लीकेबल होने के लिए do not do stuffs that won't make you applicable, that you won't go and end up giving us an AFSB also. So please do not attempt if you do not know any answer or if you are unsure in any question. Do not just do akkad bakkad bambebo and take it. It will lead to losing marks in the paper. इस बार का कट ऑफ was 151. मैंने जितनी पेपर दिए हैं अभी तक in AFCAT, this was the lowest cutoff that AFCAT has gone. In my last 1.5 years of giving AFCAT, this is the lowest cutoff that AFCAT could go, 151. हमेशा the cutoff when I had given the previous exams would go to 155, 160 तक भी गया है. There was one time it had gone to 161 also. This is the lowest, 151. 155 तो मिनिमम होता था कि 155 तक तो जाएगा ही जाएगा. AFCAT में इस बार मैंने जितने बारी दिया है, this is the lowest cutoff, but still people couldn't clear because max of the people had done this in the GS. They over attempt, they just do कि हाँ चलो जो होना होगा हो जाएगा, जो नहीं होना होगा नहीं होगा. Do not go with this strategy in AFCAT, especially in GS. एक क्वेश्चन सही करने पे आपको 3 मार्क्स मिलते हैं and one wrong question
ends up in -1 negative marking. Now, first of all, many people do not understand this negative marking concept. Let me explain you this negative marking concept. आपने suppose 100 score किया, ठीक है? उसमें से आपने अगर 20 क्वेश्चन गलत किए हैं, तो remember this 20 will get subtracted from here only. You would end up in 80. So basically, if we talk about, you do not lose just 1 -1, you lose -4 in total. 3 नंबर तो आप लूज कर रहे हो बिकॉज क्वेश्चन आपने गलत किया, और 1 नंबर और आप लूज करके आ रहे हो क्योंकि आपने क्वेश्चन गलत किया है. सो बेसिकली ओवरऑल में यू लूज 4 मार्क्स जो आपके ही पेपर में से कटने वाले हैं. तो अगर इफ यू स्कोर 171 सपोज, एंड अगर आप उसमें से 25 गलत कर देते हो, इवन दो यू वर एबल टू क्लियर, बट आपके इस नेगेटिव उसके कारण योर स्कोर comes to below 151, which was the actual cutoff this year. And people, I have seen literally people getting just 2 or in fact 1 marks less than the cutoff. पेपर उसलिए नहीं क्लियर हुआ. So do not over attempt or do not attempt in confusion. 10% भी डाउट है छोड़ दो. स्पेशली जीएस सेक्शन तो मत ही अटेम्प्ट करो. अगर 10% डाउट भी है उसमें, छोड़ दो पूरे क्वेश्चन. मैथ्स रीजनिंग में यू कैन स्टिल टेक अ बिट ऑफ रिस्क, बट जीएस में तो प्लीज डू नॉट टेक दिस रिस्क. जितना आता है जीएस में करो. अगेन आई एम सेइंग जीएस इज नॉट योर पेपर कट ऑफ के लिए. जीएस इज योर स्कोर बूस्टर. द above marks that you score over and above the cut off, वो जीएस से आ रहा होता है. पेपर क्लियर करने के लिए मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग तगड़ा रखो, पेपर क्लियर हो जाएगा. एंड फॉर पीपल हु आर नॉट गुड इन मैथ्स, आई वुड अगेन से राइट द फॉर्मूलाज, रिवाइज, practice as much as you can, go with the mocks, go with the PYQs available on the website, go with it and revise as much as, practice as much as reasoning. उठा लो ना, कोई जरूरी थोड़े है एफकेट का पेपर ही उठाना होगा आपको. कोई जरूरी थोड़े है कि खाली एफकेट के पेपर में जितने मॉक्स में क्वेश्चंस थे, एफकेट के पेपर के में जितने मॉक्स में आए थे, जितने पीवाईक्यूज आए थे, हमने तो कर लिया. अब इससे आगे क्वेश्चन नहीं एग्जिस्ट करता है. दिस इज नॉट द, गो विद द बैंक क्वेश्चंस, गो विद एसएससी के क्वेश्चंस, solve as much as you can. If you are not still not having confidence, because when you will sit in the on the day of the paper na, everything depends upon the confidence, the practice, the concept that you had applied in this days of your whole preparation. It is always said na that खून प्रैक्टिस में उतना बहाओ ताकि आपका जाके वॉर में खून कम बहे. ये हमेशा बोला जा रहा होता है. So do the same, burn the midnight oil right now so that when you are in the paper, you can attempt the paper easily in a free state of mind. And जब आप क्वेश्चन देखो तो आपको लगे कि yes I know. You do not go blank. Max people go blank in the paper. And then जो आ भी रहा होता है ना, वो भी गलत करके आते हैं. First of all, see, this is a human psychology. If you see, बोर्ड, कोई भी बोर्ड पेपर जब बना रहा होता है, वो पहला 2 से 3 क्वेश्चन थोड़ा टफ देता है, so that it basically the confidence of the student shatters a bit. उसका काम ही यही है भाई, because you are sitting in a competitive exam. The aim of the exam is not to clear everyone. The aim of the exam is to make sure how much can't clear the exam. So when you see the first 2-3 questions, do not get panicked. ये मत समझने लगना कि अरे मेरे को तो 2-3 क्वेश्चन नहीं आ रहे, मतलब कि पूरा पेपर में नहीं. No, this is not the case. क्या पता 5th-6th क्वेश्चन से आपको आने लगे सारे क्वेश्चंस. So नहीं आ रहे, leave it, move to the next question, but do not get panicked. इसमें क्या होगा, if you start get panicking in the middle of the paper, जो क्वेश्चन आ भी रहा होगा आप उसको भी गलत कर रहे होगे. So this was the whole strategy for AFCAT 1 2024. Again, I would say practice maths, reasoning, English, GS. The way I had told, go with this process. You will be able to clear the AFCAT paper easily. Secondly, I would say the level of AFCAT is not so much tough that you cannot clear it if you read it. If you invest yourself, if you focus yourself in this. अच्छे से लग जाओ तो आराम से पेपर निकल सकता है. आराम से, I am saying you, पेपर आराम से निकल सकता है. It's just that you have to get yourself into it.
कर लो मेहनत 6 महीने, आराम से पेपर निकल जाएगा. You will be going for AFSB. So this was the whole strategy for AFCAT 1 2024. Rest other YouTube videos as well as other information you will get on the website as well as on the YouTube channel. And please keep up with the pace, keep up with the preparation, revise as much as possible, as much as you can take down notes, turn into highlights and write as much as possible so that it is in your brain and you can retain it. Please revise and try to retain. अगर आप रिवाइज करते रहे लेकिन आपके रिटेंशन पावर नहीं है तो फिर कोई फायदा नहीं है पढ़ने का. रिवाइज करो तब रिटेन कर पाओगे, रिटेन नहीं हो पाएगा तो फिर पेपर देने में कोई फायदा नहीं है. सो increase your retention power also. This will help you not only in GS, it will help you in other fields also. And please do not study GS with too much involvement into it. Study GS strategically, the way it should be studied. 25 क्वेश्चन आते हैं GS में. If you do correctly 12 to 15 questions also, it's enough for the paper. But make sure when you are solving maths, 20 क्वेश्चन आते हैं, go 15 plus questions in maths. Reasoning 25 questions आते हैं, go at least 20 plus questions. Reasoning is easy or moderate, both I would say, all depends upon practice. English के 30 questions आ रहे होते हैं, go 25 plus. Calculate, पेपर कैसे नहीं निकलेगा. 15 into 3 is 45, 20 into 3 comes out to be 60, 25 into 3 comes out to be 75. कैलकुलेट करो पेपर कैसे नहीं निकलेगा आपका. 6 plus 7 13 14 15 150 तो यही हो जा रहे हैं आपके. मैंने सिर्फ ये नंबर्स लिए थे, बट आई एम सेइंग यू प्लस जाओ, प्लस आपका पेपर यही क्लियर हो जा रहा है. GS एटलीस्ट go with 12 to 15 questions. इतने ही सॉल्व करना है, 12 से 15. इसके ऊपर लिमिट अगर आप जा रहे हो तो इट्स ओके, इट्स फाइन, यू गो ओनली इफ यू आर 100% श्योर विद द आंसर. नहीं श्योर हो, अक्कड़ पक्कड़ बम्बे बो मत खेलना चालू करो उस पेपर में. यू विल एंड अप लूजिंग मार्क्स हियर. सो इट्स बेटर go with 12 to 15 questions. 12 into 3 36, 186. Enough. People have reached academy in 170 also. They were meriting in 170 also. आपने तो तभी भी 186 लाए हो पेपर में. So follow this strategy for maths, reasoning, English and GS and पेपर आराम से निकलेगा. Rest, stay focused, stay competent and I would say be punctual with yourself. If you are not punctual with your routine, जो रूटीन बनाते हो, जो रूटीन आप बनाओगे कि हाँ हर दिन मेरे को कितने मैथ्स के क्वेश्चंस करने हैं, कितने रीजनिंग करने हैं, कितना इंग्लिश करना है, कितना जीएस करना है. इफ यू आर नॉट कंसिस्टेंट, इफ यू आर नॉट, परसिवरेंस बोल के जो वर्ड होती है ना, अगर आपके अंदर नहीं है तो पेपर नहीं क्लियर होगा. पेपर तभी क्लियर होगा अगर आप अपने वे में फोकस्ड हो, अगर आप कंसिस्टेंट हो परफॉर्मेंस में, पेपर आराम से निकलेगा. आराम से पेपर निकलेगा. AFCAT is not such a big exam that it can't be cracked in one attempt. It can be cracked provided you have the right strategy, provided you know how to study. Rest, other information, everything is available on this website. Everything is available on the YouTube channel. Go through the website, go through the YouTube channel. Read whatever material you have, but do not read over extra. Read strategically. Read only which is important for you, that will help you with the examination. You end up reading the whole IAS का पेपर का पूरा सिलेबस पढ़ लिया है. क्या फायदा उसका जब आपको वो कहीं काम नहीं आने वाला है AFCAT के पेपर में. उससे नहीं, आप पूरा GS पढ़ लिए हो IAS का, कितने ही क्वेश्चन निकाल पाओगे? 25 क्वेश्चन. कोई श्योरिटी थोड़े है कि सारे 25 के 25 क्वेश्चन आपको आ ही रहे होंगे. सो प्लीज फोकस accordingly, makes your strategies accordingly. तो
तो पेपर आराम से निकलेगा. And for further information or any information regarding AFCAT and other courses, there is a number that is being displayed on the screen. You can refer to this number and contact on this number for further information. Thank you.